Hello students, today we are doing the topic of data mining, that is unit 11. First of all, what is data mining? Data mining refers to hidden predictive information from large databases. बेसिकली जो डाटा माइनिंग होती है इसमें क्या है कि दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द हिडन प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डाटाबेसेस. Data mining technique can yield the benefits of automation and exiting software and hardware platforms. जो डाटा माइनिंग तकनीक होती है कैन yield द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, और जो एग्जिटिंग जो पहले से हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या हमें बेनिफिट देती है. Data mining tools can answer business queries that traditionally were too time consuming to resolve. In this unit, you will learn about data mining approaches, uses, and its related issues. Also, applications of data mining will be discussed. As the unit progresses, you will learn about the data mining models, predictive, summary, network, and association. Finally, data mining algorithm basics will be introduced. अब जो डाटा माइनिंग होती है उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि जैसे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसमें हमें क्या है कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना है, तो उस चीज़ को हम डाटा माइनिंग बोल देते हैं. डाटा माइनिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिक रिसर्चिंग लार्ज स्टोर्स ऑफ डाटा टू डिस्कवर पैटर्न एंड ट्रेंड्स दैट गो बियॉन्ड सिंपल एनालिसिस. It uses sophisticated mathematical algorithm to segment the data and evaluate the probability of future events. Some key terms to know before going further detail in data mining. जो डाटा माइनिंग है उसमें क्या है कि वी ऑटोमेटिकली सर्च द डाटा फ्रॉम लार्ज डाटा बेसिस, ठीक है, और इसमें हम सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं. दैट्स आल्सो हैव द मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स. Data are any fact, number, text that can be processed by computer. Today organizations are accumulating vast growing amounts of data in different formats and different databases. Information. The pattern, association or relationship among all types of data can provide information. Knowledge. Information can converted into knowledge. अब इसमें डाटा है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है, ये सब जो है इसमें कुछ की टर्म्स होती हैं, ठीक है, दैट इज अ की टर्म्स ऑफ डाटा माइनिंग. Process of knowledge discovery. Let us have an overview of steps one by one. First is data cleaning. It refers to removal noise and inconsistent data. जो डाटा क्लीनिंग है इसमें क्या है कि ये रेफर करता है टू रिमूवल नॉइस एंड इनकंसिस्टेंट डाटा. मतलब इसमें डाटा जो होते हैं उसमें नॉइस वगैरह जो होती है या इनकंसिस्टेंट डाटा को रिमूव किया जाता है. डाटा इंटीग्रेशन. इन दिस स्टेप मल्टीपल डाटा सोर्सेज में बी कंबाइन. इंटीग्रेशन मतलब जब बहुत सारे डाटा सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है. डाटा सिलेक्शन. इन दिस स्टेप डाटा रेलिवेंट टू एनालिसिस टास्क आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द डाटाबेस. डाटा सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी डाटा है दैट हैव सम एनालिसिस टास्क आर रिट्रीव फ्रॉम द डाटाबेसेस. डाटा ट्रांसफॉर्मेशन. इन दिस स्टेप डाटा इज ट्रांसफर ऑन कंसोलिडेटेड इनटू फॉर्म्स एप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग बाय परफॉर्मिंग समरी और एग्रीगेशन ऑपरेशंस. मतलब इसमें डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एंड इट्स कंसोलिडेटेड इनटू फॉर्म्स दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग. Data mining, this is a central process where intelligence methods are applied to order to extract data pattern. So that is the intelligence method actually. Because of that is just not a कि आपने summary है उसमें से कुछ डाटा निकाले, but उसमें वो चीज़ें निकाली that have some intelligent purpose. Pattern evaluation. This step is used to identify the truly interesting pattern representing knowledge based on some interestingness measures. पैटर्न एवोल्यूशन में क्या है कि दिस स्टेप इज यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रूली इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट रिप्रेजेंट द नॉलेज बेस्ड ऑन सम इंटरेस्टिंग मेजर्स. नॉलेज प्रेजेंटेशन. इन दिस स्टेप विजुअलाइजेशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तकनीक्स आर यूज टू प्रेजेंट द माइंड नॉलेज टू द यूजर. नॉलेज में क्या है कि जो विजुअलाइजेशन है या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तकनीक्स है उनको यूज किया जाता है टू प्रेजेंट द माइंड नॉलेज टू द यूजर. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी. So here is a diagram. Data mining, the core of knowledge discovery. First of data clean किया, integrate, data source combine किया, data warehouse, then task city data, data mining, pattern evolution, and last is your knowledge discovery. Type of data mining task. Two type of data mining tasks are, first is prediction method. This type of method uses some variable to predict unknown or future values to another variables.
प्रोडिक्शन में क्या है कि इस तरह के जो मेथड है, ठीक है, दैट यूजेस सम वेरिएबल टू प्रेडिक्ट अननोन और फ्यूचर वैल्यूज. डिस्क्रिप्शन मेथड्स, दिस टाइप ऑफ मेथड फाइंड्स ह्यूमन इंटरेबल पैटर्न दैट डिस्क्राइब द डाटा, मतलब जो उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. पर्पस ऑफ डाटा माइनिंग enables people to discover information that can act on to better understand, selectively market to and retain their best customer to sharply cut customer fraud. जो डाटा माइनिंग है वो क्या करते हैं कि दैट enables the people to discover information that acts on better understand and that have selective market to and retain their best customers. Data mining approaches. Two widespread data mining methods for finding concealed pattern in data are clustering and classification analysis. Classification and clustering are often cited in identical breath. They are different analysis advances. First is, imagine a database of customer records where each record represents a customer's attribute. जैसे एक डाटाबेस है कस्टमर रिकॉर्ड्स का, जहाँ पे हर एक रिकॉर्ड में क्या है कि जो कस्टमर के एट्रीब्यूट उसको रिप्रेजेंट करता है. दिस कैन identify such as name and address, demographic data such as gender and age, financial attributes such as income and revenue spent. Clustering is automatic method to group allocated records together. Related records are grouped together in the basis of similar values. Clustering में क्या होता है कि दे हैव सम सिमिलर वैल्यूज, तो उसका क्या है क्लस्टर बना दिया जाता है, यानी कि दे हैव द ग्रुप ऑफ वैल्यूज विच इज सिमिलर. दैट इज अ क्लस्टरिंग एग्जांपल. क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 1, क्लस्टर 4, एंड दे हैव सेम वैल्यूज. Clustering. Records inside a cluster are more alike to each other and more different from records that are in other clusters. जो एक रिकॉर्ड जो क्लस्टर में होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन जो दूसरे क्लस्टर का डाटा होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है. Counting on specific implementation, there is a kind of measures of likeness that you use, but the general aim is for approach to coverage a group of associated records. Classification is a different method than clustering. Unlike clustering, classification analysis require that the end user understand ahead of time how classes are characterized. A common approach of classify is to use decision tree to pattern and segment records. New records can be classified by traversing the tree from the origin through branches and nodes to a leaf representing a class. अब जो common approach है that classify to use decision tree and to partition and segment records. New records can be classified by traversing the tree from the origin through branches and nodes to a leaf representing a class. Regression. The dependency of one or more independent predictor variables on a single response variable is modeled using regression. Regression में क्या होता है कि that the dependency that is have the one or more independent predictor values on a single response variable. ठीक है, that's a dependency actually. ठीक है, that is example. 60 इफ यस है, ठीक है, सेविंग है 50 है, देन लाइकली टू बी, इसको मतलब क्लासिफिकेशन क्या, अगर ये हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका टेबल है या वैल्यूज है वो इधर जाएगी. जैसे यहाँ पे अगर इनकम है, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन $60,000, सो इफ यस देन सेविंग्स ग्रेटर देन 5%, if yes likely to upgrade, if no not likely to upgrade, and if your income is not greater than 60,000 then savings greater than is equal to 10%, if yes then likely to upgrade, is not likely to upgrade. Data mining uses. Data mining is utilization for a variety of reasons to both personal and public parts. बेसिकली जो डाटा माइनिंग है उसको बहुत तरीके से यूटिलाइज किया जाता है. इंडस्ट्री सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिसिन commonly use data mining to decrease charges, enhance research, and increase sales. Using customer data sample over several years, business can involve forms that predict if a customer is a good credit risk or whether misfortune claim may be frauded, and that should be investigated more neatly. जो कस्टमर है, ठीक है, जो that have sampled their data for several years, business that involve to predict if a customer is a good credit risk and that have a misfortune, maybe fraudulent, or that should be investigated more neatly. The medical community sometimes utilize data mining to help forecast the effectiveness of the procedure or surgery. ठीक है, जो medical community है that sometimes utilize data mining to help forecast the effectiveness of procedure or surgery. मतलब इस
सभी जगह पे जो है आपका जो माइनिंग है वो यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हैव डिफरेंट एडवांटेज, इंडस्ट्रीज में है, कस्टमर्स में है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट कोई रिस्क होता है, कुछ भी है, तो दे माइनिंग देयर डाटा एंड दे कैन इन्वेस्टिगेट इट. Data mining issues. First is privacy. One of the key matters raised by data mining technology is not an enterprise or technological one, but in social. It is the issue of industry privacy. Data mining makes it possible to investigate routine enterprise transaction and glean a significant amount of information about persons' buying habits and preferences. Data integrity. Clearly, data analysis can only be good as data that is being analyzed. A key implementation dispute integrate inconsistent or redundant data from distinct sources. Integrity, that means to say कि डाटा आपका सही रहे, इसमें कोई गलती ना हो. सो बेसिकली अगर एक की इम्प्लीमेंटेशन हो तो डाटा आपका क्या इनकन्सिस्टेंस और जो रिडंडेंट डाटा है, ठीक है, वो भी आपका डिस्टिंक्ट सोर्सेज में नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ यू हैव अ की वैल्यू. कन्फ्यूजन. Another issue of concern is to decide if it is better to set up relation database structure or multi-dimensional. मतलब कौन सा हम database set करें, relation या multi-dimensional. In a relation structure, data is retained in tables allowing ad hoc queries. In a multi-dimensional structure, on the other hand, group of cubes are arranged in array, with subgroups created according to the category. While multi-dimensional data mining relation structure perform better in client-server environment. अब जैसे कन्फ्यूज़न है जी, जो रिलेशनल है या मल्टी डिमेंशन में से कौन सा यूज़ करें. रिलेशन में जैसे होता है उसमें टेबल्स होता है, डॉग क्वेरीज होती हैं. जो मल्टी डिमेंशन उसमें क्यूब, एरेस, ऑल हैव द कैटेगरीज, ठीक है. जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी डिमेंशन डाटा माइनिंग रिलेशन, मतलब दैट इज़ अ बेटर फॉर क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट. सो कई बार इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है. दैट्स आल्सो इशू. कॉस्ट. Finally, there is an issue of cost. While system hardware costs are fallen specifically inside past 5 years, data mining, data warehousing, including self-reinforcing. The more mightily the data mining queries, the larger the utility of data being gleaned from the data. The larger the force to increase the amount of data being assembled and sustained, while increasing the pressure to much quicker, more might data mining queries, the raises the pressure for bigger, much quicker system, which is more expensive. ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे डाटा हमको चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट जो होता है बढ़ता जाता है, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव. Data mining applications. Data mining is a relative new concept that has not completely mature. Basically, that the concept which is not totally mature. Regardless of this, there is a number of industry that is already using it on a normal basis. फिर भी इसको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो यूज़ करते हैं. सम ऑफ दीज कंपनीज इंक्लूड शॉप, बैंक, इंश्योरेंस फर्म्स. Data mining can be utilized to find pattern association that would else be difficult to find. This concept is popular with many business because it permits them to discover more about their customer and make intelligent trading conclusions. जो data mining है, that have to utilize to find pattern association that has find difficult to find, and this concept is also very popular in many business, and because it pertain them to discover more about their customers and make intelligent trading conclusions. There are a number of applications that data mining has. The first is called market segmentation. With market segmentation, you will be able to find behavior that is a common among your customers. You can look for pattern among customers that appear to buy the same product at the same time. मार्केट सेगमेंटेशन में क्या है, यू विल बी एबल टू फाइंड बिहेवियर दैट इज़ कॉमन अमंग योर कस्टमर्स, मतलब जिसमें जो आपके कस्टमर्स का बिहेवियर एक जैसा रहता है. ठीक है, सो यू कैन लुक द पैटर्न अमंग द कस्टमर दैट अपीयर टू बाय सम प्रोडक्ट एट द सेम टाइम. Another application of data extraction is called customer churn. It will permit you to estimate which customer are most likely to stop purchasing your products or services pursuant to one of your competitors. ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे इसमें क्या होगा कि इसमें कस्टमर को मतलब एस्टिमेट किया था कि कौन है जो आपका जो दे स्टॉप परचेजिंग योर प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज एट प्रोसीड वन ऑफ योर, मतलब फिर आपको छोड़ के वो आपके कंपटीटर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी तरफ जाएगा. बाय फाइंडिंग आउट विच प्रोडक्ट्स आर स्टोलन द मोस्ट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट देयर गुड्स एंड नोटिस दोस आर स्टीलिंग दैम. मतलब फिर इस चीज़ पे भी होता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा चोरी हो रहे हैं. ठीक है, और सम ऑफ कस्टमर विद मोर इंटरेस्ट टू बाय सम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन. और इस चीज़ का पता है कि जो कस्टमर हैं दे वांट टू बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड यू शुड रिकॉग्नाइज दैम. आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो.
Then what are the limitations of data mining? Privacy issues. The concern about individual privacy have been increasing enormously recently, particularly when internet is booming with the social networks, e-commerce, blogs. Because of privacy issue, persons are afraid that their personal information collected and utilized in unethical way, and possibly that face of lot of problems. Business collect data about the customer in numerous ways to understanding their buying behavior. A stage may come when the organization may acquire many organizations is vanished. At that time, the individual data they are unlikely to be sold to other party or may be leaked. That have privacy issues because of that your data is on the net or your internet, so you have some problems like your data is shared by someone or that's the person have issues about these things. Security matters. Security is a large issue. Companies have data over our workers, customers, including social security, anniversary, payroll. Although how property this information is taken care of still doubtful. There have been situations that hackers accessed and roaming big database of customer of large companies. Misuse of data, inaccurate data assembled through data mining using ethical purpose can be misused. This information can be exploited by unethical people or companies to take advantage of there are various ways, and which is not only limited to fake identify proof creation and pass confident data to competitors. Basically जो डाटा होता है, बिकॉज ये भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या अनएथिकल पीपल के अगर हाथ लग जाता है तो वो उस चीज़ का क्या है एडवांटेज लेता है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके फेक आईडीज बना के ठीक है उसको क्या यूज़ करता है. Although if incorrect data is used for decision making, it will affect the result of company. अगर डाटा भी इनकरेक्ट यूज़ किया जाएगा तो ये आपकी कंपनी के इफेक्ट करता है. Data mining models. There are several different types of data mining. First is predictive. This type of models predict how likely an event is to be occur. Usually higher the score, the more likely to event to occur. Summary models. These models are used to summarize data network. This used to represent data nodes and links. Association models are used to find characterize co-occurrences. So that are the data mining models. Data mining algorithms. A data mining algorithm is set to heuristic and calculation that creates a data mining model. The algorithm first analyzes the data you provide, looking for specific type of pattern, trends, and then create the data. मतलब first analyze, ठीक है, then the data you provide, and then according to that they have some different algorithm classification. This type of algorithm predict one or more disease variables based on other attribute in the dataset. Regression. This type of algorithm predicts one or more continuous variables such as profit and loss based on other attributes in the dataset. Segmentation algorithm. This type of algorithm divides data into groups, clusters, items that have similar properties. Association algorithm. This type of algorithm finds correlation between different attributes in a dataset. The most common application of this kind of algorithm is for creating association rules, which can be used in market analysis. The association के base पे sequence analysis algorithm. This type summarize frequent sequence or episode in data. So that have some sequences that such as web path flow. So that's all about in this unit, that is the data mining. I hope you understand it. Thank you.